मतलब ये कहाँ से पूछ दिया है? लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के टीचर से भी ये पूछोगे ना, उनके भी पसीने छूट जाएंगे क्वेश्चन देख के कि यार ये कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। इतना डीप नॉलेज, इतना दूर की नॉलेज आप जो पढ़ते हो उससे बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आर बाउंसर्स। फोर्थ पॉइंट इज नंबर्ड पॉइंट. दिस आई थिंक because UPSC tries to be objective, therefore it would have obviously given values to that for every point you should give. I'll talk about body in next coming slides, but conclusions. Again, prepare conclusions while making notes. So this I have not done myself, but I feel that I should have done this. So पहली स्क्रीन में ना मतलब ये मास्टर क्लासेस लिखा है, तो आई वुड लाइक टू से मैं मास्टर नहीं हूँ, और इस पेपर के लिए आपको मास्टर बनने की जरूरत भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो जैक ऑफ मोस्ट ट्रेड्स है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी नहीं है कोई भी. मतलब उनको हर पेपर का थोड़ा थोड़ा आता है और उससे ही वो अंदर घुस जाते हैं. तो ध्यान रखिए, मतलब हर पेपर में आपको अबव एवरेज स्कोर करना है, और कुछ पेपर में जो आपको नेचुरली आता है आप नेचुरली उसमें काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे, और वो ही काफी है आपको अंदर लेके जाने के लिए. तो किसी भी पेपर को इग्नोर मत करना, और किसी भी पेपर को ये मत सोचना कि मतलब ये पेपर हमारा किसी और पेपर को कंपनसेट कर देगा. ठीक है, सेकेंड स्लाइड. हाँ ठीक है, सेकेंड स्लाइड ये मेरी फोटो है लबासना की. ठीक, इसमें मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी टाई को देखिए, वो टेढ़ी है, विच टेल्स कि हम लोग नॉर्मल इंसान होते हैं. मेरे को पता है जब मैं प्रिपेयर करता था तो हम यूजुअली बहुत फिक्शनलाइज कर देते थे टॉपर्स को, रैंकर्स को. तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे सिंगल डिजिट रैंकर्स से भी मिला, नॉर्मल सी लोग हैं वो भी. तो आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, सब लोग ओपन है. ठीक है, हाँ ठीक. इस स्लाइड में, ये मेरी स्लाइड नहीं, जीएस ये सिविल्स डेली की स्लाइड है. इसमें ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है टू इम्प्रूव ओवरऑल मेंस स्कोर. तो पॉइंट टू नोट हेयर इज, आप ग्रामर मिस्टेक करते हो, वो यूजुअली दिखता नहीं है एग्जामिनर को, लेकिन अगर उसको दिखता है ना तो उसको चुभता है. और बेसिक इंग्लिश के स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई स्ट्रक्चर आपने लैंग्वेज ऐसी लिखी है जो लगाने में उसको दिमाग लग रहा है, तो एसेंशियली अगर एग्जामिनर आपके जो आपने लिखा है उसको पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होएगा. तो कोशिश कीजिए कि अपने जो इंग्लिश या आपकी कोई हिंदी या कोई और लैंग्वेज हो, उसको ऐसी रखिए कि नॉर्मल आदमी उसको पढ़ सके, उसको बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े ये समझने में कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो फ्रस्ट्रेट होएगा तो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होंगे. इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि गुड हैंड राइटिंग हमेशा आपको हेल्प करने वाली है. ठीक, अच्छी हैंड राइटिंग है तो उसको कोशिश कीजिए, मेंटेन कीजिए उसको वैसी रखने की. ठीक है, ये कुछ नहीं है. हाँ, यहाँ चालू करते हैं, यहाँ से मेरी स्लाइड्स चालू होती है. ठीक है, तो मैं मेनली 3 चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ इस पूरे प्रेजेंटेशन में. वो होगा कि कैसे पढ़ना है इस पेपर के लिए, नोट्स कैसे बनाने हैं इस पेपर के लिए, और आंसर कैसे लिखना है इस पेपर के लिए. पॉइंट टू नोट हेयर इज कि आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बाद नोट मेकिंग सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शायद से जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो स्टडिंग है, क्योंकि पढ़ सब रही है, लेकिन उसको पढ़ के सब लोगों को अलग अलग चीजें समझ में आती है, वो रिटेन नहीं कर पाते. रिटेन के लिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, पर इनसे किसी से आपको नंबर नहीं मिलने वाले. नंबर उससे मिलेंगे जो आप पेपर में लिख के आओगे, और उसी के दम पे आप सेलेक्ट होंगे. तो अगर आपको सिलेक्शन करना है या सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं. इसलिए हर चीज जो आप कर रहे हैं उसको हमेशा सोचिएगा कि यार ये चीज करने या ना करने से क्या मेरे नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर उसका आंसर हाँ है तो उस चीज को कर लो. अगर उसका आंसर ये है कि यार ये गुड टू नो टाइप के, इससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पॉसिबली इग्नोर किया जा सकता है ऐसी चीजों को. ठीक है, दिस इज नॉर्मल डिस्क्लेमर. मैं सर्विस में हूँ तो मेरे को देना पड़ेगा. आई शेयर माई पर्सनल व्यूज हियर, दीज आर एंटायरली माई ओन व्यूज एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफिशियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स डिपार्टमेंट्स. Readers मतलब आप are asked to consider these views as totally personal expressions and not official statements. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये मेरी जर्नी है. तो मैंने 2018 में अपनी नौकरी छोड़ी थी, और नौकरी छोड़ने पे मैंने क्या कहते हैं
नौकरी छोड़ी मैंने और मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम उसी साल दे दिया, 3 महीने की पढ़ाई करके, और मेरा एज एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो इससे लेसन यही है कि भाई प्रीलिम्स को थोड़ा सीरियसली लो, बहुत टफ पेपर होता है, आराम से नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका आधे आधे नंबर से प्रीलिम्स मिल जाता है। तो टेक प्रीलिम्स सीरियसली और कोशिश करो कि प्रीलिम्स हर बार हुए आपसे, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पेपर लेते हैं। इसमें सेकंड चीज जो है, 2019 और 2020 में मेरे GS1 के मार्क्स जो है उस वो नियरली सेम थे, 77 और 83, कोई बहुत ज्यादा अलग मार्क्स नहीं है, सेम कैटेगरी के मार्क्स है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो 2019 में मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ GS1 पेपर बहुत कम थी, वेराज 2020 में मैं बहुत बिल्कुल अलग से GS1 पेपर की तैयारी करी थी, तो वहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग GS1 की पेपर की काफी इंप्रूव हुई थी। तो मैं बहुत शॉक्ड था जब मैंने 2020 में ये देखा कि मेरे नंबर बिल्कुल नहीं हिले हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, ये पर्सनल इवेल्युएशन ये कह रहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम 0 to 99 ऐसे पहुंच चुकी है, 0 to 90 टाइप्स पहुंच चुकी है। तो मैं बहुत शॉक था, और इसी शॉक में एक्चुअली मैंने ये डिस्कवर किया कि फाइनली एग्जामिनर को ये पता ही नहीं है कि मेरे को कितना आता है। एग्जामिनर मुझे जज करेगा मेरे आंसर से, और मेरे आंसर वैसे ही दिखते थे जैसे मैं पिछले साल लिख रहा था। इसलिए जब तक मेरी इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग जो थी वो पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तब तक मेरे नंबर में भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। तो वहां मैंने एक्चुअली अपने आंसर राइटिंग को एक अलग से देखा, अलग से प्रिपेयर किया आंसर राइटिंग के लिए, और फाइनली आंसर राइटिंग इंप्रूव करके 112 लेके आया। अनदर थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा इस पे वो ये था कि 2021 में मैंने ड्रॉप किया था। तो मतलब मैं जब अप्रैल 2020 में रिजल्ट आया था मेंस का, कोविड की वजह से टाइम शेड्यूल डिले चल रहा था, तो मतलब मैं काफी शॉक था। तो मैंने डिसाइड किया कि काफी सोचा, मैंने करीब 15 दिन सोचा था कि ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, और फाइनली मैंने ड्रॉप किया। मेनली बिकॉज मेरे को लगता था कि जब मुझे पता ही नहीं है कैसे मेरे नंबर, कैसे नंबर आते हैं, तो मैं दोबारा से सेम चीज देके क्या करूंगा, 83 से 85 हो जाता, 87 हो जाता, कुछ खासा अंतर नहीं होता। इसलिए इन योर केस ऑल्सो कभी आपको सोचना पड़ सकता है कि आपको ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, ड्रॉप करना हमेशा रिस्क रहता है। कुछ लोग जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे होते हैं वो कभी कभी ये सोचते हैं कि ऑप्शनल चेंज करना है कि नहीं करना है, तो उसके ऊपर भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। बोल्ड डिसीजंस हैव पेड ऑफ इन पास्ट फॉर मेनी कैंडिडेट्स। मैंने अभी तक ऑप्शनल चेंज नहीं किया, तो लेकिन बहुत कैंडिडेट्स ने किया है। मेरे जितना मेरे को आइडिया, अनुदीप दुशेटी हैं, वो पहले एंथ्रो से देते थे और फिर कोई उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया था और फिर वो AIR1 ले आए थे। तो ऐसे ऑप्शनल चेंज करने की स्ट्रेटजीज कुछ लोगों के लिए काम कर जाती है, बट यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है। तो मेरी ये 5 साल की जर्नी थी। तो 5 साल की जर्नी में मैंने क्या सीखा, ये वाली स्लाइड में एक्चुअली काफी डिटेल में जाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा मैं इसको पढ़ना। तो पहली चीज जो थी वो ये थी कि मैंने ये सीखा कि यार मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPSC जब आपको रैंक करेगा तो वो सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंक करता है। अब ये रियलाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहा था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लगता था यार अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है पेपर की तो वो ऑटोमेटिकली मेरे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगी, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पेपर के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी आपकी। हाँ। तो इसमें जो पॉइंट 2 है वो एक्चुअली क्या था कि आप समझिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं और उससे जो आप नोट्स बनाते हैं, ये आपको एक फाउंडेशन देता है। बट सिलेक्शन के लिए आपको इस फाउंडेशन से ऊपर उठना रहता है। तो वो ऊपर आप तभी उठ सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। तो मैं आप आगे पूरा पेपर है, मैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा कि क्या आंसर राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है। तो आप समझिए, आप एसेंशियली ये समझिए कि बिना फाउंडेशन के आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है उसका। तो नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि पेपर के वक्त आपको कंटेंट की समस्या ना आए। लेकिन वो कंटेंट पेपर में तभी उतरेगा जब आप उसको उतारोगे। तो वो उतारने के लिए स्किल चाहिए होती है, और वो टोटली इंडिपेंडेंट स्किल है आपकी फाउंडेशन से। तो आपका हो सकता है आपको पूरा पेपर आता हो,
बट आपके नंबर 70-80 आ रहे हैं क्योंकि आप उसको उतार नहीं पा रहे हो। तो ये इस फैक्ट को रियलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को करीब करीब 3 अटेम्प्ट और 1 ड्रॉप ईयर लगा ये फैक्ट रियलाइज करने में। ठीक, ये पॉइंट 3 वही है, मेरे मार्क्स में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता पहले, और जैसे ही मेरे को लगा, मेरे को समझ में आया कि ठीक है यार, ये पूरा जो गेम है ये बिल्कुल अलग है, इसमें आंसर राइटिंग स्किल मैटर करती, मेरे नंबर अचानक से बहुत बढ़ गए। ठीक है, 2 पॉइंट और। गुड नोट्स, गुड नोट्स क्या होता है? गुड नोट्स, अब ऐसा होता है यूजुअली नोट्स बनाते हुए ना लोग बात सोचते नहीं है कि नोट्स का करना क्या है, वो बस पढ़ते जाते हैं और नोट्स बनाते नहीं। बट जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो जब प्रीलिम्स पास होता है और मेंस आता है, 3 महीने मिलते हैं आपको, तो आपको समझ में आता है यार नोट्स ऐसे होने चाहिए जो मैं पढ़ भी पाऊँ। तो क्या था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पे 3200 पेज के नोट्स थे, 3200 पेज के करीब नोट्स थे, 3200 हैंड रिटन। तो मैं उसको कभी पढ़ ही नहीं पाया। मैंने फर्स्ट मेंस का अटेम्प्ट जो लिख दिया था वो ऐसा था, मतलब मैं खुद हैरान था कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने नोट्स बनाया पूरे 1 साल, मैं उसको पढ़ ही नहीं पाया, मैं पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाया। तो मैं उसको सेकंड अटेम्प्ट में और कम किया, और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने 1200 पेज के नोट्स करीब कर दिए थे, सारे सब्जेक्ट्स मिला के, जिसमें GS1 करीब 200 पेज से 225 पेज के आसपास के नोट्स थे। तो जब आपके 200 पेज 300 पेज के आसपास के नोट्स होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं एक नहीं 2-3 बार रिवाइज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं नोट मेकिंग पे जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो आप समझिए, जब एसए का पेपर दे के आया था मैं फ्राइडे को, उसके बाद हमें 7-8 घंटे मिलते हैं घर पे, और अगले दिन सुबह अगर आप जल्दी उठ जाओ तो 2-3 घंटे और मिल जाते हैं। मैं इस 7-8 घंटे और 2-3 घंटे 11 घंटे के आसपास में मैंने अपना पूरा GS1 और पूरा GS2 इनके करीब 500 पेज के नोट्स रिवाइज कर दिए। पर अगर ये 1000 पेज होते मुझ पे तो मुझसे रिवाइज ही नहीं होने वाले थे। तो इसलिए नोट मेकिंग्स में जरूर ध्यान रखिए कि आपको ये इतने बड़े ही होने चाहिए कि आप इनको दोबारा रिवाइज करें। फाइनली नोट मेकिंग जो है ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आपको आंसर लिखने में हेल्प करें। और भाई यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो GS1 की टॉपिक लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने सामने चिपका दीजिए। मतलब मेरे सामने यहाँ एक वॉल है, और उस वॉल पे मैंने वो 4 पेज चिपका रखे थे, GS1 2 3 4 और ऑप्शनल के 1 2, तो वो चिपकाइए, वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल। तो आंसर राइटिंग के बारे में मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जब आप आंसर लिखते हो ना, तो ये पेपर ह्यूमैनिटीज का है। तो मेरे हिसाब से, मतलब मुझको पता नहीं है वो कैसे इवेल्युएट करते हैं यूपीएससी वाले, बट जो मेरे को फील आती है वो ये है कि वो लोग कुछ अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जी 10 मार्क में वो 10 पॉइंट देखने की उम्मीद करते हैं। तो अगर आप 7-8 पॉइंट ही लिख के आ रहे हो या आप 5 पॉइंट लिख के आ रहे हो, तो भले ही आपको कितने ही अच्छे पॉइंट लिख के आ रहे हो, वो आपके पूरे नंबर नहीं दिलवाएंगे। तो ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि आपको कैसे लिखना चाहिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 पेज मिलता है फ्रंट और बैक, तो वहां पे 2 ब्लॉक बनने चाहिए। इंट्रो लिखिए, फिर अगले ब्लॉक में 5 पॉइंट लिखिए, अगले पेज में दूसरा ब्लॉक लिखिए, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें 5 पॉइंट, और एंड में कंक्लूजन और खत्म हो गया। सिमिलर 15 में। सॉरी बोलिए। इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अगर आप इसको बाइलिंगुअल कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे। अच्छा, नहीं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ यार, ओके। ठीक है। सो पॉइंट इज कि इन 10 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट 2 blocks and try to write 10 points. So write an intro, then go to first block, write 5 points, then go to second block, write 5 points more, and then conclusion. What is a block? A block is a aspect of the question that is asking. So in 10 marks, usually they try to ask 2 aspects related to the question. And in 15 marks, they ask 3 aspects related to the question. If in 15 they sometimes ask two aspects only, then you can divide your presentation like 7 points each and 2 blocks. Third thing is try to fill all the pages that are given. Believe me, in my opinion, their perception plays a lot of role in what an evaluator finally thinks of your question is. So if an evaluator thinks that you have written so much that if you were given another page, you would have filled it as well, then he would think that you know actually a lot and he will give more marks. So if you leave some pages empty,
that gives a bad impression that you don't know, you don't have the content enough to fill 3 pages or 2 pages. Therefore, you don't know the question. So try to fill all the pages. I seen candidates who have actually write in GS paper 4, they give a lot of pages. So they write 50 pages per 50 words per page, but they fill all the pages. So they are writing 200 to 300 words question in 5 pages by taking 50 pages. Usually you can get 75 to 80 words in a page very easily. Fourth point is numbered point. This I think because UPSC tries to be objective, therefore it would have obviously given values to that. For every point you should give so much. For every point you should give so much marks. So I don't know what UPSC does, but in my opinion, to have an objective criteria, there should be a point that the number of points matters, and therefore quality of points is okay, one aspect, but number of points is also very important, and that's why I said ki in 10 marks you should write 10 points, in 15 you should write 15 points. These are minimum points. You can always go up. Write conclusions and intros. This usually all the serious candidates do follow this advice, but sometimes they don't. So that it's a healthy practice to write intro and conclusions. Also, don't think that intros and conclusions are just formalities. Intro is very important because the moment you write a good intro, the examiner knows that you know the question, and he assumes that if in future there is some mistake in quality of a point, then that is a genuine mistake and not a mistake that you don't know it. So good intro will impact his impression throughout your question paper, throughout the answer. And conclusion is actually, you should remember that when he's giving you marks, he has the last thing is that is conclusion. So if your conclusion is very impactful, it will provide you an edge like 0.25 or 0.5 marks extra just because you have written a very good conclusion. So write good intros and good conclusions. Use the language of the question itself. So use the language of the question itself. I'll show you this by example. So I go to page 19. So here there is a question 16. If you can see my pointer, I'll read the question. Why did human development fail to keep pace with economic development in India? So over here, if I were to write 3 blocks, these are 15 marks. So essentially 3 blocks have to be written. So one I would say human development block. So like in fat commercials होते थे ना, पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हो. So human development, I would say write 1947, what is human development and what is human development in 2023. Write another block, 5 points, write what was economic development in 1947 and what is now 2023. And then write third block, why human development fails to keep pace with economic development. So every block has a subheading. So for first block, I would use human development in India. Same wordings of the paper. In second block, I would use economic development in India. And in third block, I would use human development fails to keep pace with economic development in India, colon, and 5 to 7 points will be there. So that is how you should use the same wordings that are given in the paper to actually write your answer. So in GS2, you would always feel there is steps recommended, recommend some suggestion, give suggestions, recommend. So don't always say way forward, way forward, way forward. If they say suggest some measures, so write suggested measures. If they say suggest reform, suggested reform. Use that word. That word, when you use it, it gives a feeling to the checker that you have actually completed all the aspects of the question that was asked. So when you use the words, it gives a sense of completion to the examiner, and once examiner gets a sense of completion, he will give you more marks that you have touched all the aspects of the paper. Finally, the last point, read Hindi question if English is tricky. So there was a question of child cutting is going to social media and things like that. So I did not understand word cutting. My English is not that good. So I read Hindi that was given over there. Sometimes this very simple act of reading Hindi gives you more clarity as to what is being asked from you.
I don't know whether it is provided in some other language also, but I have always seen Hindi and English. If you are challenging, if English is challenging, read Hindi to get better clarity on what is the question. ठीक है, इसमें this is what how are you going to write intros. So in intro you need to understand that you have to have uh, some uh, some of the intros prepared in your note making itself. For example, I want to show a page. So this is my notes. So regionalism is here, and the first statement that you see is definition of regionalism. It states that regionalism is social, political, psychological ideology that seeks to promote regional identity and regional political developmental issues. So this is simple definition of regionalism. What is important is that because it is in my notes, so whenever I read notes on regionalism, I always read my introduction also. So if question comes on regionalism, I don't need to think as to what I'm going to write. It has become very, you can say, automatic that regionalism, okay, this is, it's a social, political, ideological ideology. So you write it very fast. So that is the way to actually ace intros. A good intro, for example, in geography, a lot of phenomena are there. For example, cyclones. So my cyclone notes actually contains that cyclone is a large mass of air that is rapidly rotating and rising above, and it happens because of low pressure development. So things like this, you can write any definition that you want, but if you have prepared it and it is in your notes, it becomes very easy and very natural to when you are actually going to write it in your paper also. So that is one thing that you should remember while making notes, that your note should contain uh, uh, direct intros. So now coming to specific questions. So questions related to art and culture, usually you can write dates, places, and marquee examples in intro. So for example, if they are asking about, let us say, Brideshwara temple, so talk about Chol Rajya, Chol Empire in the intro itself. Talk about the timeline that it happened around 10th to 11th century AD. So this way you can actually try to give an introduction to something which is very intangible. So usually art and culture introduction is tricky. What you will write about Bharatanatyam? So write something related to the empire or the time period in which it happened. In modern India introductions are easy. Usually you can prepare introductions for modern India. For all major events, there are some leaders or a viceroy or a governor general associated with that. That name should come in introduction and should come in square bracket, so that it is clearly visible to the examiner that you know what is being talked about. In modern India and in history in general, you can always talk about previous events. So for example, in World Wars, you can talk about where World War II happened because of the Treaty of Versailles of World War I. So that thing in introduction gives examiner uh, the sense that you know what you are talking about. So in history, you can always write intros that are related to previous events which happened from what is being asked. In geography and society, usually definitions work. If there are 2-3 things asked in a question, so write 2-3 things definition. So for example, if they are asking globalization and climate change, how are both these impacting, write globalization, what is the definition of globalization, write what is the definition of climate change. So 2 definitions are also acceptable to them because they see that, okay, you are trying to define basic terms that are presented in the question. In natural resource, again, use case and place where it is most found exported. So for example, if there was a question on coal, so main use case of coal is provide heating. What is heating used? In industries, heating is used, one, to boil water, and boiling water, and from boiling water you can generate electricity. Other use cases to run furnace, which actually power heavy industries or all the heavy industries. So that you write in the introduction, main use case, these two, and where it is found in Chotanagpur region, India. Okay, this way you can write introductions of natural resources. I'll talk about body in next coming slides, but conclusions.
Again, prepare conclusions while making notes. So this I have not done myself, but I feel that I should have done this because it helps you to give a good conclusion, and it also improves your marks while giving good conclusions. So this is one thing where even I am also going to improve this year. Relate conclusions with questions. So usually when you are writing question, so you forget about what was the question when the time of conclusion arrives. So in very tricky questions, what I suggest is, if you have time, go before writing conclusion, go back and read the question again. This will give you a good idea on how you are going to write the conclusion. It should not sound that you write it like hence proved or thus proved, like what we used to do in maths. LHS equal to RHS, thus proved. Should not sound like that, but it should sound intelligent. And if you can add another value point in the conclusion, that is also good. For example, architecture of Chol, you can add that these architectures are still existing, which provides testament to the technology of that time, that these have survived all the forces of weather. History conclusions are easy. Always talk about the next events. This is more true in modern India history because a lot of events happen and you know a lot of events. For example, what is the conclusion of non-cooperation movement? That it set the stage for next events to arise, which finally led to civil disobedience movement. What is conclusion of civil disobedience movement? It set the stage. Rights, which led to the next important movement, which is Quit India movement. So always talking about next related event is good in history for conclusions. In Indian society, usually Indian society is talking about some issue in India. Questions are talking about some issue in Indian society. And therefore, in the conclusions, what I've seen is using the knowledge of GS2 social justice aspect in the conclusion helps. In physical geography, usually they'll talk about disaster management, how you are going to deal with this related aspects. So using knowledge of GS3 disaster management also helps. Natural resource, again, geopolitics and economics you can discuss. This is all about a conclusion that I have to say. Answer writing, art and culture. Okay. Art and culture, I have specifically written diagrams, examples, drawings. Over here, I would like you to see these two drawings that I do, one here and one here. So this is a drawing of a cave in Lakhduriya cave in Uttarakhand, and this is a drawing of Pashupati Seal. This drawing, Pashupati Seal drawing, I actually drew in my mains paper of GS1, which I got selected. So there was a question on importance of buffalo, bull, something bull in Indian culture. So I drew Pashupati Seal and said that this is buffalo, which is related to bull. So once you draw the seal, your drawing will be bad, but it will create an impression to the examiner that you actually know what you're talking about. And these are very simple drawings. So just having a simple drawing will give an examiner that you're not just a bookish child who have read things in the book and came up. You have actually seen these things. Related to this, I'll talk about industry. So this actually gives a good impression that you know what you're talking about. You have seen, you have experienced these things, especially art and culture, which is very experiential thing. So over there, if you want, you can draw things also. Contemporary or historic performance, very important. For example, in Carnatic music, I always write Purandar Das and Muthuswami Dikshitar name. These names are important for that book. Similar to a lot of people intuitively know घरानाज, ग्वालियर घराना के ये वो है, क्या कहते हैं, गुरुजी, and इंदौर घराना के ये गुरुजी. So writing these names actually give a very good impression to the examiner that you actually take an intelligent interest in the art and culture that you are talking about, related to empires and kingdoms of that time. This is very important. So I will before we also talk about this. So art and culture is always related to the empire or the society in which it arises. So you should also relate art and culture to the empires and the societies in which it arises. For example, in Chol kingdoms, the art and culture should always be said that they are magnificent because Chol were very rich people, very rich empire. Similarly,
in क्या कहते हैं, Vijayanagar Empire, you would see goddess that is being a lot of temples are related to that goddess. So when you are writing about that those temples, write that this was actually the preceding deity of Vijayanagar Empire itself. All the signatures that Vijayanagar kings do were done in in the goddess's name. So write that this aspect. This will give examiner uh, a good impression that you know things in detail also. You're not just talking about, and also it gives you another point to write about it. And talk about the spread of art and culture. This is obvious. Answer writing in modern India history. In modern India history, what happens is you have actually read it in a lot of detail, and this is around 200 years of history, 200 to 300 years of history, which is taught in very detail. If you see my art and culture notes and all the ancient medieval notes, they are only 100 pages. But if you see my modern India history notes, there are 300 pages notes. So that is the difference of details. And therefore, when a question comes, the examiner is expecting details from you. You need to know what are the specific things that happened. And therefore, here you should study in detail and write also in detail. Don't write too general things. Parallel happenings. Most cases, modern India, there are parallel happenings which are happening in parallel to the mainstream narrative. So talk about those parallel happenings also. And don't forget to write about INC meetings. Usually, you will find INC meetings are always there. Make a note that this is going to be a point in your mains answer, and therefore do note what are the INC meetings and do write it down also. Answering world history. My approach to world history was very simple. I did not study too much because it does not come a lot. I studied it very less. For every major, like French Revolution, I have 2-page notes. American Revolution, 2-page notes. So what I found is that when you make so crisp notes, it is easy to revise also. And you have to write everything that is in your note in all the questions of that. Just you need to do some formatting to actually get to what is asked so that the examiner feels that you know what you're talking about and you are actually addressing the question rather than vomiting. So write everything that you know, as simple as that. In Italy-German unification, draw diagrams. Now catch the lingo. This is important. Catch the lingo is very important. So world history is taught with a lingo. For example, in American Revolution, you need to write this in your answer that no taxation without representation. In colonization of Africa, if you say that Africa was being colonized by different countries, that is okay. But the lingo here is scramble of Africa. So use the word scramble of Africa. So this lingo projects a impression that you know what you're talking about and you've actually read it from a very academic point of view. And you're not just writing stories. So catch the lingo is important. Key personalities, philosophies, ideas. Don't forget these, but you will not forget these because these are very basic. Post-independence also. Post-independence is also very less studied subject. So here also the general thing is write everything that you know. Okay, how far is there? Okay. Write everything that you know. In post-independence, one important thing that is not in other history is that post-independence there is tenures of Honorable Prime Minister Sirs or Ma'ams. So you need to talk about Honorable Prime Minister Sir, his actions, his or her actions, or his or her contributions to the history that is being discussed. So if Chipko movement is being asked, so talk about the role of the CM of that time. If Bhudan and Gramdan Andolan is being asked, talk about what Honorable Prime Minister of that time, which was Shri Jawaharlal Nehru sir, what he used to talk about this, whether he used to support these programs or not. In fact, he supported these programs and he actually got an act passed in the parliament and therefore also talk about related government acts. Usually these two things are there in post-independence. So while preparing, do make a note of them and in answer writing also do ensure that you are at least addressing these two aspects in post-independence history. Now comes to Indian society. Indian society, very easy. Everyone knows Indian society a lot. Everyone knows Indian society a lot. So what happens is, because it is very intuitive now, so everyone remember that all the questions of Indian history, everyone is going to write them. No one is going to leave them.
and therefore when the examiner is checking, he's seeing 20 to 30 answers of Indian society in the same day and same questions. So he will get bored very easily. So, and you also don't have any extra point to generate, because Indian society, everyone knows, everyone have their experiential view of Indian society. So over here, your marks, whether he's going to give you 3.5, 4, 4.5, or 5, is going to depend upon whether you are able to structure your answer and whether you are able to touch the diversity of dimensions that is there. So I'll talk about this diversity of dimensions with respect to young women suicides question, which I'm going to discuss in slide 19. So if you're capturing the diversity of dimensions and also trying to provide a good structure to Indian society questions, that is very important. That will give you half marks to 1 marks extra just to get the questions. Okay, adopt table format. Table format, what is table format? Is actually you draw a table over here. In one column you write dimensions. So for example, you write agriculture, education, marriage, gender, caste, these type of dimensions in one. And over here you write points. So what is that point of education? 1, 2, you write 2 points. What is point of gender? 1, 2, 2 points. So like this you write. So when the examiner sees that, okay, so he'll see the structure of your question is very clear. We've seen that this is the dimension and this is the point that is being talked about, this dimension. And diversity, or obviously he's going to see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, all the rows that you have made are capturing different dimensions of the same paper, of the same question. So that way the examiner will be able to directly see your structure and the diversity of dimensions in the question. So this is what I personally feel has worked for me, table format. I use tables extensively in my answers. There are multiple other ways to show this, but I have chosen table format. If you feel there is some better way to choose it, do choose it. Also tell me. I'll also incorporate in my questions. But what my experience is table format does it. Okay. Relate to current affairs example. I don't have a example top of the mind, but what was there? So sometimes gender issues are being taught. So I always used to write that, okay, even the modern women's have patriarchal elements. And I used to give the example that when mass molestation in Bangalore happened at a New Year Eve. So at that time, a member of NCW said a very patriarchal statement, and she was a women member. So that is an example which in 2020 was a current affairs example. So using that current affairs example, you can state a statement. So when the examiner reads now, okay, this is the point that you are saying that patriarchy also affects women, and then you are giving this example. So examiner feels that you know current affairs and you are also able to relate current affairs to Indian society concepts. So this relation helps. Data point, very important. This is a key thing that is going to differentiate between two good answers of Indian society. For example, if the question marriage is sacrament in modern India, I know the data is that 0.7% marriages end up in divorces, and around 7% of marriages end up in separations, not legal separation, just separations. So when you write this data point, it is very important, and it differentiates your answer from other which are also good answers, good structured answers. So if you are able to capture data points, that is going to help you a lot. Write these data points liberally in your answers. Points and counterpoints, always talk about marriage sacrament in Indian society. So the point is that, okay, we see that marriage is still a sacrament because divorce rates are so low. But what is our counterpoint? The divorce rates still, even though they are low, but they are increasing quite rapidly. In the previous decades, it was expected that 0.3% cases were going in divorce, but now 0.3 to 0.7. So that's a more than 2 times jump. So it is increasing, but still very low. So marriage is sacrament, but still there is some questions being asked. So because India is diverse country, so you will always get points and counterpoints. Now relate to GS2 papers. Indian society questions usually talk about some problem that is there in Indian society. They never ask you
flat questions, which there is no problem in Indian society. They are trying to make you asking you an observation to make. Usually there are problems and they require analysis, and therefore GS2 comes handy always. So in marriage question, you can talk about family courts, that India set up family courts, and family courts there is a provision of social counseling, which can actually reduce divorce rates by providing marriage counseling. So that points come in conclusion, and this point comes in conclusion related to GS2. So when examiner is reading all the points and finally he sees such a conclusion that okay, this person is able to relate this to other GS2 paper, that will give you half marks to 1 marks extra, because it is in his mind when he's giving you answer, when he's giving you marks. Geography. Here, diagram, maps, charts, example, all bolds, all full caps, because they are very important. Without them, believe me, without them, no question can of geography can be done in a good sense. Because geography, if you are not from geography optional, some of the questions of geography you will really struggle to find content. In last year's paper, the Freud's question which was there, it is very deep technical knowledge that they are talking about, and very difficult for a person to actually write 150 marks, 150 words on the on such a small thing, Freud's. So if you know it, then it's good. But if you don't know it, then maps, diagrams, charts, examples, these are going to help you to reduce the space that is given to you. If you draw a world map of half a page and you show where major Freud's formation is, that map says a lot of things, and the best thing it does is it takes half the page, and so what you need to only fill is 1.5 page. So therefore, draw maps, draw diagrams. If a cyclone question is there, draw a diagram of cyclogenesis, how cyclogenesis forms, diagram of cyclone. That will actually take a lot of space, and it will also not look bad. So when examiner sees, and geography optional, the geography question, when they see a diagram, they usually say, okay, it's a 1 marks extra for the diagram itself. So diagram helps in two ways. One, it fetches you marks. Other, it helps you to fill the space that is provided to you. Again, geography is very linked to environment and disaster management. So use your knowledge. In fact, this is in general true for all the GS paper, GS 1, 2, 3, 4. All these papers are related. Their knowledge base is very overlapping. And therefore, you can use all the knowledge base that is there to answer any question. For example, I'll tell you this second question that was there, difference between Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore approach in education, nationalism. So I know Mahatma Gandhi's approach of education is Nai Talim, N-I-T-E-E-L, Talim. Why? Because my GS4 notes contains Nai Talim question, Nai Talim content. So because my GS4 notes contains this thing, therefore I am able to actually write answer in GS paper 1. So this helps you to know that all the 1, 2, 3, 4, their knowledge base is overlapping, and 1, 2, 3 there is significant overlap. 4 is slight overlap and slight difference. So use those knowledge in all the papers. Physical geography, go in details. If you know the phenomena that is being talked about, explain it in detail. That is the best thing that can happen. That way the examiner, because geography is not like history and Indian society. These are very, you can say these are more liberal of the liberal arts. Geography is slightly more technical of the liberal arts, especially when geomorphology and geology is being talked about. So over there is scientific approaches, and if you explain it by diagrams and in detail, these scientists, geography people like these geologists like this approach. So go in detail and explain the phenomena in detail. That is also a good thing in geography. Self-evaluation. One thing that I forgot to write in answer writing skills was, one of the most important aspect of answer writing is actually reading skills. So if you are able to read the question very well, then you will also be able to answer it very well. So for example, do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? Question 8, I will repeat.
Do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? So if I read it now, it is talking word is losing. So that means there are two aspects to this question. Marriage as a sacrament, why is it like a sacrament, and why is it losing its value? So these two aspects you directly read it from the question. Question 2, what was the difference between Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? Four things are being talked about: Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, education, or nationalism. So if you read the question like this, you will be able to understand, okay, what are the dimensions that we are going to talk about. Mahatma Gandhi's approach to education, Mahatma Gandhi's approach to nationalism, Rabindranath Tagore's approach to education, Rabindranath Tagore's approach to nationalism. And then we need to contrast and differentiate these things. So if you are able to read the question well, then you will be able to address all the aspects of the question well. So question 19, why is caste identity in India both fluid and static? Three dimensions. It is fluid, it is static, and it is both fluid and static. So this is how you develop dimensions in the question. Okay. So question reading skill very important. If you read a question well, then you will your answer will reflect that you have addressed all the aspects that are being asked by the question by the UPSC. And if you are unable to read it, then no matter how you are well at writing, how good you are able to write, you will always find that all the questions that you are going to write, examiners will give a remark that it did not touch all the aspects that was being asked. So if you use any of these coaching walas evaluation for test series or for mains, and if you're getting this remark that did not cover all the points, all the aspects asked, left a part of the question unanswered. So this is a problem of poor answer reading, and it can be improved very easily. If you see previous year's mock test of toppers, you will sometimes see that in questions they underline few things. This underline is because they are going to touch those few things, and therefore reading the question well is also a very important skill in answer writing, which I unfortunately missed in this slide. Okay. Self evaluation. Why self evaluation is important? To be honest, last year I did not take any paid test series. I only take all the printouts of the questions, and I wrote the answers myself. So there was no evaluator present who's going to give me feedback on how am I going to increase my marks. Also note that although all the coaching walas are very good at this, but the people that they hire are not themselves very good people. So mostly they hire those candidates who are unable to get into the paper and are thinking on how they are going to earn, and they have 3-4 years of the practice because they are associated with the paper, so they try to venture in certain associated fields. So answer checking, the evaluators who these companies hire are not very good at their job. They do not do a good job, they do not do a fair job, and therefore you need to actually not be trusting of them so much and trust your own judgment of the answers. So this is one thing that I felt was very important. So all the answers that you write, self-evaluate them. What I used to do is I used to count my points and have a good estimate of my whether the point is of good quality or not. If a point is of poor quality, I give 0.4 marks, 0.4 marks for that point. And if it's of poor quality, I give 0.45 marks for that point. And thus, after 10 points, 4 or 4.5 marks will be there. And if I don't write a point, then obviously 2 or 3 marks are there. Points, and there are sub-points. Sub-points is like data point. So point is, in marriage as a sacrament, there is point that in India still there is belief that divorce has a social taboo. This is the point, that divorce has a social taboo attached to it. What is the sub-point? Sub-point is that there is only 0.7% cases that end up in divorces. So this is important thing to this is a sub-point because it is supporting your main point, which is your argument. So therefore sub-points are considered slightly less value, and don't write detail about one thing only. Try to generate bigger points. So this is one thing that I used. Diversity of points is more important than details on the same point. So don't
provide all the data points that you exact. For example, in Google's hunger index, don't go on to tell all the data points about hunger. What are the hunger indexes data? The 1-2 is enough. And also sometimes you say that in temple architectures this happens a lot, that you are talking about temple architecture. So you give an example that okay, Nagra style of architecture, there is Khajuraho temples. Other you can give other examples that I'm forgetting names. But if you keep on going on giving examples, that will not be a good sub point, because your point has already been communicated that you know the temples and you know the point that is that you are trying to make. So don't give same points. Try to give diversity of the points. Quantity is more important than quality. This sounds quite counterintuitive, but what I feel is that if you are clearing prelims, you already have the required quality. If you are trying to increase your quality, that is like taking from 95 to 99 and from 99 to 99.9. So try not to go in quality of the point a lot, and try to figure out whether you are writing reasonable points and number of points, because 2 reasonable points are generated very quickly. 1 quality point takes a lot of time to generate. And the last thing is reattempt questions that you do poorly. So while you are preparing, you would always write practice questions. So one big problem is with practice questions is you write a practice question, you say acha nahi likha, and you move on to the next question. Don't do that. Whenever you find a question in which you are poor, that is the area which you have to actually develop, so that you can get an edge from other people who are also struggling in that question. So always, all the questions that are poor, always develop them, or always reattempt them. If it takes 2-3 attempts, give it 2-3 attempts. In the initial times, I remember I used to attempt 3 to 4 times a single question which I write poorly, so that I improve my my presentation in that question. Okay. Now coming to previous year question, this is, I will not be giving full answers, but I'll be like showing you my approach to these tricky questions. So there are 3 types of remarks: bouncer, difficult, and typical. Typical questions are those questions which I feel should be there in your notes. So for example, a typical question number 5: why is world today confronted with a crisis of availability and access of freshwater resource? So this water as a resource should be in your notes, and you should have written about these things. So this is typical because you just need to vomit what is there in your notes. So having good notes and revising notes regularly will be able to get you through these typical questions, which is around 9 in total. Nine questions are typical. So all these typical questions are very easy. They are simple, straightforward questions. You don't need to think a lot in them. It should be there in your notes, and using that knowledge, you can directly answer these questions. Then there are difficult questions. These are questions that are not exactly in your notes. So for example, question number 2: what was the difference between Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore in their approach towards education nationalism? Nowhere in my notes you will find Rabindranath Tagore's approach to education and nationalism. It is quite deep, and Mahatma Gandhi's approach to education is also very slight, like half a page of notes. So writing with very little content, you have to write a 150 or 250 word question. That becomes difficult. So what happens is, with these questions, you have to you have to think a lot and think creatively to answer these questions. That is why it is difficult. It is not difficult. So difficult questions generally are there in your notes. It's just that your notes is doing the beating around the bush. It's not spot on to that question. It is revolving around that question. You need to recollect all that knowledge and frame your answer. Bouncer question, in my opinion, are those questions which are so abnormal that you can come out of the paper and say that this question is out of syllabus. So for example, this question, bring out the socio-economic effects of introduction of railways in different countries of the world. मतलब ये कहाँ से पूछ दिया? Like मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के टीचर से भी ये पूछोगे ना, उनके भी पसीने छूट जाएंगे क्वेश्चन देख के कि यार ये कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन. इतना डीप नॉलेज, इतना दूर की नॉलेज आप जो पढ़ते हो उससे बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन आर बाउंसर्स.
और ये बाउंसर क्वेश्चन इज माय फोर्टे, मैं इन क्वेश्चन में काफी अच्छा परफॉर्म करता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है एटलीस्ट। तो होता क्या है, व्हेन दीज क्वेश्चंस कम, यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर, पहले तो इनसे ना डरने की जरूरत नहीं, ऐसे जो भी सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन होते हैं इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज every candidate is going to struggle in these questions. So your aim in these questions is not to get 5 out of 10 marks or 7.5 out of 15 marks. Your aim in these questions is to get slightly better than other candidates. So if other candidates are getting 2 out of 10, you try to get 3 out of 10. But how will you do that? By structuring your question, by having good answer writing skills. So structure your question well. So I'll give you what is my take on these bouncer questions. So for example, first question, one thing, always remember that the question will provide hints on how do you reach to the answers. So for example, explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. तो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है geographical factors कैसे development of ancient India लेके जाते हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या पॉइंट बन सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉइंट बनता है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो यूजुअली नेचुरल बाउंड्रीज होती थी। सो हुएवर कंट्रोल्स गंगा कंट्रोल्स नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हिस्ट्री इतनी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आता है, सतपुरा रेंज आती है, उसके ऊपर उसके नीचे तापी आती है, उसके ऊपर नर्मदा आती है, उसके ऊपर विंध्या रेंज आती है। तो भाई चार ज्योग्राफिकल वो आगे क्या कहते हैं डिफिकल्टीज, तो उनको क्रॉस कैसे करोगे और अपनी पावर कैसे प्रोजेक्ट करोगे। सो दिस इज वन एस्पेक्ट कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया में ज्योग्राफिकल फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया में कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, तो हम पढ़ते हैं कि वेस्ट इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वीक थी और वो बहुत ज्यादा ट्रेड बेस्ड थी और वो लैंड ट्रेड करती थी सेंट्रल एशिया के थ्रू और सेंट्रल एशिया और ये क्या कहते हैं वेस्ट एशिया के थ्रू, क्योंकि वहां पे भाई बंजर जमीन है, थार डेजर्ट है, था 2000 साल पहले भी था थार डेजर्ट। तो वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो ऑब्वियसली ट्रेड बेस्ड होगी। वेराज जो मगध राजा था, मगध ईस्ट बंगाल रीजन जो है, बंगाल रीजन की इकोनॉमी जो भी वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगी क्योंकि वो डेल्टा रीजन है, वहां पे बहुत उपजाऊ जमीन है, तो दैट इज वेरी इजी। सिमिलरली साउथ इंडिया में जाओगे तो आप देखोगे कि पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, whoever captures ports captures the nearby region, क्योंकि पोर्ट्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। so that's how you can try to link geographical factors to developments of ancient India। सुनने में ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट किया जा सकता है ये क्वेश्चन। Another question, socio-economic effects of introduction of railway in different countries of the world, question number 3। तो इसको हमेशा सोशो इकोनॉमिक सुनते ही एक सोशल एस्पेक्ट पे बात करना है, एक ब्लॉक आपका सोशल एस्पेक्ट पे आएगा 5 पॉइंट, दूसरा 5 पॉइंट आएंगे आपके इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ ये बात नोट कर लेना, किसी को नहीं पता कि डिफरेंट कंट्रीज में रेलवे कैसे होता है। मतलब अगर आपको ये पता है कि इंडिया रेलवे थाने से वहां चली थी मुंबई में, थाने से मुंबई पोर्ट सीएसटी तक गई थी, इफ यू नो दिस इज अ वेरी डीप नॉलेज बाय इटसेल्फ। not for other countries, no one knows what is the, no one has studied their railways, so but you can talk about how railway leads to social development। so general points लिखिए, social development में exchange of ideas, कैसे रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, लोग चलेंगे तो कनेक्टिविटी के थ्रू आइडियाज भी जाएंगे। it leads to urbanization, spread of urbanization, urban regions में ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है तो spread of urbanization। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आप बात कर सकते हो कि कॉलोनियलिज्म जो है वो रेलवेज की डेवलपमेंट से इम्पैक्टेड था, क्योंकि अगर आपको हिंटरलैंड रीजन्स को कंट्रोल करना है, यूरोपियंस यूजुअली कोस्ट को कंट्रोल करते थे, तो यू नीड रेलवेज फॉर ट्रू मोबिलाइजेशन एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम दोज रीजन्स। तो आप ऐसे अलग अलग डायमेंशन जनरेट कर सकते हो इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स पे, जो कि रेलवेज का इम्पैक्ट रहता है। मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है और आप उन पॉइंट्स पे भी बात कर सकते हो कि किसी जैसे रशिया में रेलवे की चलने का रेलवे बहुत लेट आई थी, तो इसलिए उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उधर लेट आया था। तो आप ऐसी चीजें ऐसी चीजों के ऊपर बात कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन पे। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ये आंसर बहुत अच्छा है, बट ये आंसर ऐसा है कि अगर बाकी लोगों को 2 नंबर मिल जाए तो आपको 3 मिलेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर अच्छे से किया। और दिस 1 mark difference leads to a 10 mark to 20 marks difference in final result, because there are 20 questions like this. Another bouncer question, how are physioids formed?
why do they constitute some of the most picturesque areas of the world? Very difficult question if you're not from geography optional. So I'm not from geography optional. I just know what are physioids. So formation of physioids I don't know a lot. So but I'll still write whatever I know. So physioids mainly glacier के interaction से चलते हैं. Glaciers is very important word in formation of physioids. What I see is ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं physioids. तो वहां पे मैं लिख सकता हूँ, मतलब मैं मैप बना देता है एक्चुअली कि ये इधर इधर पाए जाते हैं, ताकि मेरा कंटेंट जो मेरे पे है बहुत लिमिटेड कंटेंट, उतने लिमिटेड कंटेंट से काम चल जाए क्वेश्चन में. व्हाई डू मोस्ट पिक्चरस्क एरियाज ऑफ द, यहाँ पे रिमेंबर दैट डायमेंशंस मैटर अ लॉट मोर देन व्हाट इज एक्चुअली द पॉइंट्स. सो why do they constitute some of the most picturesque? You can talk about that. One dimension is they are in temperate regions. So temperate regions में होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, घास होती है, वो अच्छी होती है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से ज्यादा सुंदर दिखता है टेम्परेट ग्रासलैंड. देन वाई टेम्परेट रीजन्स में समटाइम्स स्नो होती है, तो स्नो ऑलवेज क्रिएट्स अ मोर पिक्चरस्क सेटिंग्स. टेम्परेट एक और है इकोनॉमिक्स का पॉइंट्स आता है यहाँ पे कि बिकॉज दीज कंट्रीज जो जहाँ पे फ्लोजाइड्स पाए जाते हैं, दीज कंट्रीज आर रिच, सो उनकी पिक्चर क्वालिटी भी बेटर होती है, उनकी एयर क्वालिटी भी बेटर होती है. सो ये दो पॉइंट आप इनकी इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन से डिराइव कर सकते हैं. और ऐसे अगर आप कोशिश करोगे सो यू विल ट्राई टू जनरेट मोर पॉइंट्स ऑन द सेम question which there are very difficult to understand that why physioids is leading to more picturesque areas. One aspect is construction. In tropical areas, population density is high. In temperate areas, population density is low. So construction level of construction is low in physioids area. So when you see less buildings, obviously it will create a better picturesque area. अच्छी फोटो खींचेंगे वहाँ. So this way you can think about the question. Very difficult question, but by practicing you can actually go and write an answer which will at least fetch you 1 mark extra from other candidates, and this will improve with practice. Other two bouncer questions. Explain why suicide among young women is increasing in Indian society. This is bouncer actually because it is not talking about women. Women suicides I know, we have studied, but young women suicide is difficult to answer. Therefore, your answer should revolve around what young women wants. And one very quick thing that comes to mind is the keyword young already tells you what is. Young women are not married. Sometimes they want to marry a guy of their choice, whereas traditional society does not allow that. This creates pressures. Young people do not have good emotional maintenance with themselves. They are not mature. The feature is that they are learning maturity, and therefore this creates sometimes when you don't are unable to understand, modulate your own emotions. So it creates challenges for this creates challenges for mental health issues, which leads to suicide. The introduction is definition of suicide. How do you write the introduction? Define suicide. Then start writing about, okay, mental health. You write young people unable to regulate their emotions leading to suicides. And second point, economics. So young people are less financially independent, and with reduction in financial independence comes reduction in total independence, which leads to frustration. Other point, young women, you can say love affair type of point, that young women want to marry person of their choice, which creates tension and depression, which leads to suicide. Other point, suicide among young women. Also important to notice, it is talking about increasing. So is there some current affairs related thing that happened because of which it might increase? Yes, there is. There was a COVID that time, 2 years, a lot of people were locked down. So because of reduced social interactions, already there was, you can say, some mental harm done. And because of this mental harm, you will see in coming years of the COVID when lockdown was raised, that there is increasing cases of suicide because that mental harm will get reflected into data. Sorry. So you can try to handle these bouncer questions like this. Another question in which I actually want to go is, what are the major technological changes? Question number 12. What are major technological changes introduced during the Sultanate period?
how did these technological changes influence Indian society? Very difficult question to answer because no one has read about technology of Sultanate period. In my opinion, people can say that this is more a GS3 question rather than a GS1 question because it is talking about question is revolving about technology. Point to note here is one thing that you may have read, but I read it, so I might not be a general knowledge that in the when there was Sultanate period in India, the Arab world was said to be a golden age of Muslim Islamic world. So because it was golden age of Islamic world, you can say that in every aspect of science and technology, Islamic world was at the leading edge. And therefore, you can fluke this question very easily. Fluking this question is in every technology that you know, you can say that development that happened in India was in this like major global picture that I'm trying to say, that this is a region which has high science and tech with itself. And when rulers of these region came to India to rule, obviously they will also import their science and technology. One thing that I definitely remember was introduction of Persian wheel. So a buffalo is tied to a rope and a log, and it buffalo rotates around one point, and using this mechanical and force, you do work. So this technology was called Persian wheel, and it was imported. So you write about this. So if you know any other technology that you know about that age, write on that and try to give more points to that point, that technology, because people do not have content in this question. So you have to maximize your content. Other thing that you can maximize your content is question itself talks about two aspects. So there's one part is major technological changes introduced, and the second part is how did these technological changes influence Indian society. So you can already see that there are two blocks very clearly. The first block is for first point and second block is for second point. And in second point, influence in Indian society, start talking about agriculture. Persian wheel, agriculture, irrigation improved. है ना? Persian wheel बहुत बार आएगा क्योंकि I know only Persian wheel in my answer. So economics. So economics में Persian wheel helps you to मतलब हिंदी आती है उनको, चक्की चलाना रहता है ना गेहूं पीसने के लिए, तो उसको इम्प्रूव करता है क्योंकि ह्यूमंस हटके अब गाय के थ्रू आप गेहूं पीस रहे हो. So you can use that aspect. That's why economics also improved. है ना? एक और था sluice gate जो होते हैं irrigation, वो भी पर्शियन से influence होते हैं. There's some Islamic influence in sluice gates. So they are also used in irrigation and in economics. So ऐसे आप अलग-अलग aspects में बात करो, agriculture, economics, education में math, अलजाबर करके एक आदमी था, एक आदमी किताब लिखी थी अलजेब्रा के ऊपर. ये किताब अकाउंटिंग में बहुत यूज होती है. तो अकाउंटिंग में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा एंड फॉर्मल अलजेब्रा. अलजेब्रा एग्जिस्ट करता था बट अलजेब्रा फॉर्मलाइज्ड है. सो लाइक दिस यू कैन try to generate points in a question which is very difficult to answer otherwise. So don't leave these type of questions, fill full page and generate such low quality points. At least they are good points that you are going to write, and this will give you some marks rather than it will not give you 7 marks from 15, but it will at least give you 5 marks. So rather than getting 0 or 2-3 marks out of 15, 5 is better. And this problem, everyone is facing difficulty. All candidates will face difficulty. So you don't need to worry about whether this question is very difficult or not. It is difficult equally for every candidate. So things like this. Now 1 hour is over. I'll try to wrap up other not so important slides so that you also get some time for question answers. Note making for GS1. Note making for GS1. Remember, you have to revise that notes. So revisability and notes that will help you make answer writing will be good. What is revisability? My opinion is 200 page notes होने चाहिए आपके पास, दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड लिखे हुए, और आप वो 200 पेज के नोट्स एक्चुअल मेंस के 3 महीने जो मिलते हैं आपको प्रिपरेशन में, उसमें 2-3 बार रिवाइज कर पाओगे. मल्टीपल रिवीजन ऑफ सेम नोट्स, ताकि आपके दिमाग में ऑटोमेट हो जाए चीजें. सुसाइड पढ़ा तो सुसाइड की डेफिनेशन आ गई. मल्टीपल लेवल्स ऑफ हाईलाइटिंग. तो नोट्स पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखिए
कभी भी उनको पूरा पूरा मत पढ़िए। तो पहली बार पूरा पढ़िए, अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगली बार सिर्फ वो अंडरलाइन वाली चीज पढ़ना, सारी पढ़ना मत। उससे बार पहली रिवीजन आपको शायद 10 दिन लगेंगे पढ़ने में नोट्स के, पर तीसरी रिवीजन तक आते आते वो 2 दिन में नोट्स रिवाइज हो रहे हैं। नोट्स में हमेशा मार्जिन छोड़िए, because you need to add value, or while doing the questions you will find some important points, good points, तो वो उनको उस मार्जिन में वहीं पे लिख दिया करो, तो उससे वैल्यू एडिशन नोट्स में हो जाती है। ये यहाँ पे बस ध्यान रखने के लिए किया है। ऐसे का पेपर ना दोपहर में खत्म हो जाता है 12 बजे के आसपास, तो उसके बाद आप पे एक बड़ा दिन होता है, तो GS 1-2 के नोट्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, और जब GS 1-2 होएगा जिस दिन पेपर, उस दिन आप शाम को 6 बजे घर पहुंचते, तो इसलिए GS 3 और 4 के नोट्स थोड़े छोटे रखना, क्योंकि आपको 6 बजे से ही बाकी सब रिवाइज करना है, तो दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट है। वो बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है GS 1 और GS 2 में, उसमें खाते मत रह जाना, उसमें 5 मिनट के लिए खाना और बाकी 1 घंटा 55 मिनट नोट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहता है, उसको यूज करोगे फायदा होगा। ठीक है, हेल्पफुल टिप्स। वसुंधरा जी एक बात बताएंगे, ये इनको दिए जाएगी क्या ये स्लाइड्स? हाँ जी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो ये बेसिक चीजें हैं। वो है कि आप जो भी नोट्स लिख रहे हैं उसको ऐसे लिखिएगा कि वो आपको हेल्प करे आंसर राइटिंग में, तो इसलिए यूपीएससी ने जो 1 से 12 कंटेंट दिया, उस कंटेंट वाइज नोट्स लिखिएगा। स्टार्ट कंटेंट विद रेलेवेंट फॉर इंट्रोस। हाँ, तो इसलिए मतलब इंट्रोस आपके कंटेंट में होने चाहिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, तो ये नोट्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कंटेंट for intros should be there in the first few lines of the topic that you are talking. तो अगर आप रीजनलिज्म पे बात कर रहे हो, तो पहले 5 लाइन में रीजनलिज्म की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। ब्रेथ मोर देन डेप्थ, तो डेप्थ डीप मत घुसो, डोंट बिकम मास्टर ऑफ एनी ट्रेड, ट्राई टू बिकम जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड। सो इसलिए वो फाइनली हैंड रिटन नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टाइप नोट्स, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। सर्च एबिलिटीज जो लोग कहते हैं कि टाइप नोट्स में सर्च करने की फीचर मिलता है, मेरे को लगता नहीं है वो ज्यादा यूज आता है, क्योंकि एट आफ्टर जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज किधर लिखी है नोट में, तो ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता नहीं। ठीक है, स्टडिंग फॉर GS 1। एक ही इसमें ना लिंक है, इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोई, इसने काफी अच्छा पेज बना रखा है GS 1, 2, 3 के लिए। उसमें बहुत सारे बुक लिस्ट सॉर्ट ऑफ है, तो मतलब काफी एक्सहॉस्टिव बुक लिस्ट है, मैं पूरा भी नहीं पढ़ पाया था, बट आप इसको जाके रेफर कर सकते हो, आपको सीधा बुक लिस्ट में मतलब सीधे सीधे मिलेंगे कि ये किताबें पढ़ लो। मैंने वो सारी किताबें तो नहीं पढ़ी है, पर आप समझो 80% किताबें पढ़ी है मैंने जो उसमें लिखा था। दैट्स अ गुड वे वेयर यू कैन फाइंड वेरी डिसेंट मटेरियल वेरी इजीली। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे ना 12 पॉइंट्स आने वाले हैं अगली 12 स्लाइड्स में, हर वो 12 पॉइंट 12 एक्चुअल पॉइंट्स है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको टेंजेंट्स डेवलप करने की जरूरत है। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो बोरिंग लगता है, इतना कुछ रटने को होता है कि आपको लगता है कि कैसे हो पाएगा। तो व्हाट आई डू इज, जब भी मैं थक जाता था ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ पढ़ के, तो मैं बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाता था आर्ट एंड कल्चर की, कोई इमेज देखने लग जाता। उससे कुछ नहीं होता है, उससे आप जो आपको पढ़ना है उसके आसपास घूम रहे हो, और आपका लीजर टाइम भी में 5% भी अगर आप उसका कुछ याद रख पाए कि भरतनाट्यम में ये होता है, ऐसे होता है, तो वो आपको हेल्प कर देता है आपके पेपर में। तो बोरिंग हो रहा है तो बेस्ट वे इज टू एंजॉय आर्ट एंड कल्चर, और एंजॉय करने के लिए एंटरटेनमेंट यूज कीजिए, इमेजेस वीडियो ऐसी चीजें देखिए। मॉडर्न इंडिया अगेन, यहाँ पे एसेंशियली आपको बोर नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है तो आप कभी कभी लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं होएगा भाई, आपको 4-5 नाम याद हो जाएंगे कि अच्छा सैंडर्स ये था, ये 3 लोग थे जिनकी फांसी हुई थी, है काकोरी कांड हुआ था। तो लाइक दिस यू कैन वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, कोई वॉइस रॉय पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, दैट वे यू विल रिमेम्बर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वॉइस रॉय। डायरेक्ट पढ़ना आसान है, सजेस्टेड रहता है, बट अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले आपको, कि आप वो टॉपिक पढ़ तो पाओ। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिंपल टिप, इसको बहुत ज्यादा मत पढ़ो भाई, बहुत रियरली क्वेश्चन आता है इस पे, और आता भी तो एक आता है, तो वो भी आप इतने रिसेंट हिस्ट्री में होता है तो कॉमन नॉलेज में जानते होते हैं, तो ज्यादा मत पढ़ो इसे। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन ज्यादा मत पढ़ो। इसमें मैं ना यहाँ पे एक वेबसाइट बताता हूँ, जीके टुडे,
ये काफी अच्छी वेबसाइट है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन जीके टुडे करेंगे तो 2 पेज के नोट्स आ जाएंगे, वो 2 पेज काफी अच्छे रहते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन 2 पेज के नोट्स आ जाएंगे, 2 पेज बहुत सही रहते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जीके टुडे एक अच्छी वेबसाइट है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं, तो ये हाईलाइट करने के लिए थी ये स्लाइड। चलिए फिर, हाँ इसमें भाई 11 इंडियन सोसाइटी में पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ होता नहीं है, तो इसलिए 11th और 12th क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो। वो पढ़ के काफी स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है इंडियन सोसाइटी पढ़ने का, और आपको तरीका समझ में आता है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपके आंसर में ये रिफ्लेक्ट हुआ ना कि आप बहुत आपने आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे अप्रोच किया जाता है, फॉर्मल एकेडमिक एकेडमिया कैसे अप्रोच करती है इंडियन सोसाइटी को, तो जब आप आंसर लिखते हो तो वो अप्रोच आपकी आंसर में रिफ्लेक्ट होती है। और जब एक और सोशियोलॉजिस्ट आपका आंसर पढ़ता है, एमए बीए या पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो उसको अच्छा लगता है आंसर पढ़ के कि आपको कुछ आइडिया है कि सोशियोलॉजिस्ट कैसे बातें करते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ी। ठीक, रोल ऑफ वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद होने चाहिए और केस स्टडी टाइप के एग्जांपल होने चाहिए। जैसे फ्लड्स में कुदुम्बाश्री फॉर केरला ने हेल्प किया था, तो कुदुम्बाश्री का नाम याद होना चाहिए, और वो ये याद होना चाहिए 2020 की फ्लड्स में उन्होंने हेल्प किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो बाकी इश्यूज है ना, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स, रेमेडीज, इनको भी स्पेसिफिकली पढ़ना। ये जो भी टैबुलेटेड इश्यूज है, इन इश्यूज को कभी इग्नोर मत करना। बड़ा इजी है इग्नोर करना कि अर्बनाइजेशन हम खुद देख लेंगे, बट प्रिपेयर 2 to 3 पेज नोट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक्चुअल पेपर में आप अर्बनाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसा लिख के हो जो अच्छा लगे। जैसे मेरे नोट्स में अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन में क्या होता था, मैंने लिखा है कि हम करते हैं ना ऐसे कि 5 साल के प्लान बनाते हैं, 10 साल का प्लान, 20 साल का प्लान और 40 साल का प्लान। तो इसको एक्चुअली कैस्केडेड प्लानिंग कहा जाता है। ये कीवर्ड है कैस्केडेड प्लानिंग, कि आप कैस्केड करो प्लान को, 5, 10, 20, 40। तो ये कीवर्ड जब आप आंसर में लिखते हो तो आंसर चेक करने वाले को अच्छा लगता है। तो ये कीवर्ड आप तभी लिख सकते हो जब आपके नोट्स में ये कीवर्ड हो। तो इनको प्रिपेयर करो, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे, और आपके कीवर्ड्स हेल्प करेंगे आपको। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाँ वेरी इजी, गूगल सर्च कर लो इस टॉपिक पे, ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी यूपीएससी लिख के गूगल सर्च कर दो, 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेजेस आ जाएंगे ऊपर। जो टॉप के 5 पेज है उनको डाउनलोड करो, पढ़ लो, और वो काफी ब्रॉड आइडिया दे देगा आपको कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी का कंटेंट क्या है। मेरे इस पे मात्र 12 से 13 पेज के नोट्स थे इस टॉपिक पे, और उन नोट्स ने मेरा पेपर में काफी हेल्प करी। तो कोई भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लो, छोटा मोटा जिनके नाम नहीं सुना वो तो थोड़ा रिस्की रहता है, बट कोई भी मेजर उठा लो, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक हो। आपको थोड़े टाइम में धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि ये अच्छा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट, ये इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट अच्छे नहीं है। इन चारों कंटेंट जो है, सोशल एम्पावरमेंट जो है वो GS2 है एसेंशियली, तो उस पर ज्यादा वो मत सोचना। जब GS2 का नॉलेज जो है उसको रिवाइज कर लेना सोशल एम्पावरमेंट के लिए। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इनके लिए भी इंडिविजुअली सर्च करो, और जो टॉप 5 पेज है उनको उठाओ, पढ़ लो, और हो गया। और ये तीनों टॉपिक रिलेटेड है, और इनको अलग अलग से नोट्स बनाओ, 5-5 पेज के तीनों के नोट्स बना लो, 15 पेज का नोट्स हो गया, ये पॉइंट कवर हो। हाँ, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका होता है कि आप एटलस खरीदो, और उसमें मेजर मेजर चीजें, आपको मेजर माउंटेन्स, मेजर रिवर्स ये याद होनी चाहिए। तो उस एटलस में मार्क करो, अपने पेन से ही मार्क करो कि अच्छा ये एटलस है। तो उससे आप करोगे ना तो आपकी मैप स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, और जब एक्चुअली क्वेश्चन आएगा तो आप एक वर्ल्ड मैप बना के या इंडिया का मैप बना के वो ज्योग्राफिकल फीचर्स वहीं पे पेपर पर ड्रॉ कर पाओगे। दैट विल इम्प्रूव, मतलब उससे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी में 2 दिक्कतें होती हैं। ज्योग्राफी में एक तो सब लोगों को लगता है ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी है, बट कि ज्योग्राफी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, वरना बहुत बार कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का। सो फॉर ज्योग्राफी आई हाईली रिकमेंड कि 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 एनसीईआरटी है, उनको पढ़ लो। और जो तीसरी फिजिकल ज्योग्राफी बची उसकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोचिंग वालों के नोट से काम चल जाता है। इंडियन मैप बनाते वक्त हमेशा याद रखना, आइलैंड्स को आइलैंड्स जो होते हैं ना,
लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड, उनको ड्रॉ करना बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि आप इन दो आइलैंड क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को इग्नोर नहीं कर रहे। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैं मेरी बुआ आई थी। ठीक है, फाइनली ये लास्ट टॉपिक है शायद से स्लाइड का। हाँ, ठीक, ये लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 12। ज्योग्राफी के बारे में मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, मैंने बात कर ली है कि ज्योग्राफी प्रिपरेशन लोग बाग जो होता है, हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। रियरली क्वेश्चन आता है फिजिकल ज्योग्राफी से, वो भी कभी कभी बहुत सरफेस लेवल आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना जो फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हुए। ठीक है, और एक वेबसाइट है PMF IAS करके वेबसाइट है, पुअर मैन्स फ्रेंड IAS। इसके ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को मैंने पर्सनली फील किया है। इसके फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, काफी डिटेल्ड होते हैं, इनफैक्ट समटाइम्स टू मच डिटेल। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, बहुत सस्ते 160-170 रुपए के नोट्स बेचता है ये ऑनलाइन। आप PDF डाउनलोड करो और आपका काम, वो PDF 3 PDF देता है, वो 3 PDF में निपट जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन, 1 से 2 महीने लगेंगे। पेपर में मेरे हिसाब से 50% हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आती है, 25% सोसाइटी आता है, 25% ज्योग्राफी आता है। तो अगर आप इनको इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपका फायदा रहेगा। हिस्ट्री के नोट्स भी ज्यादा होने चाहिए और हिस्ट्री की रिवीजन भी ज्यादा होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी के नोट्स कम होंगे, ज्योग्राफी के नोट्स कम होंगे, क्योंकि इनसे वेटेज, इनकी वेटेज कम है। तो जब वेटेज कम है तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। फाइनली फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे इंप्रेशन आता है कि आपने इसको एकेडमिकली अप्रोच किया। आप मतलब कहीं सुनी बातें नहीं लिख रहे, कॉमन सेंस से नहीं लिख रहे। कॉमन सेंस से सब लिख रहे होंगे, और जो चेक करने वाले हैं वो MA या PhD होंगे। तो व्हेन दे सी दैट यू आर आल्सो कैचिंग द कीवर्ड्स, यू आर कैचिंग द लिंगो ऑफ द पेपर, उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर मोर एकेडमिकली इंक्लाइंड, यू हैव अ गुड माइंड। आप उन चीजों को, कंसेप्ट को कैप्चर करें। सो यूज दोस कीवर्ड्स। पेपर आपके नोट्स में भी होना चाहिए और पेपर में भी उतरने चाहिए। ठीक है, फाइनली ये याद रखिए, आप ये कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी अगर आपने मेंस दिया है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपको, और इंटरव्यू के लिए भी। और अगर आप दोगे तो आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक है इस पेपर में। मतलब मेरे 966 मार्क्स थे, 960 कट ऑफ थी, तो 6 नंबर से मैं अंदर हूँ पेपर में। और 6 नंबर इन द व्हेन आई लुक कि मेरे से 6 नंबर से मैं पास हुआ हूँ, और 2000 नंबर का पेपर होता है टोटल, 2025 नंबर का, तो 6 नंबर बहुत कम लगते हैं। तो इसलिए देर इज अ एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व इन क्लियरिंग UPSC। और मतलब इसको यकीन करो या ना करो, पर मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चों को भी ऐसा लगता है। तो थोड़ा ध्यान रखो कि अगर नहीं हो रहा तो एक और अटेम्प्ट दो, ताकि वो लक वाला एलिमेंट हट जाए, किसी साल तो अंदर निकलो। ठीक है, और थैंक यू इतनी सारी बातें सुनने के लिए। क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच तुषार, बहुत इंसाइटफुल सेशन था। आई थिंक विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस, सो एवरीबody just direct your questions to me. I'll ask every question one by one. Okay, so you can go to your chat box and you can direct message me your question. So Tushar, एक question है, sir please also tell about how to analyze previous year questions in great detail. यार मैंने ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी एनालाइज किया नहीं है, और मैं आपको बताऊं, आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर यूजुअली जो कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, सो व्हाट हैपेंस इज दे आर सेइंग कि इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर करना चाहिए। और इस टॉपिक पे एक दो चीजें पूछी है, तो ये एस्पेक्ट्स बच रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू जज कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। और इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी टू गो फॉर द पेपर, बिकॉज एक्चुअली पेपर बहुत थोड़ा रैंडम है। UPSC को ऐसे नहीं अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो डोंट गो इनटू ऑल दोस बुलशिट कि एनालिसिस ये था। जो 12 टॉपिक लिखे हैं उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और दोबारा पूछ लेंगे तो फिर ये क्या होगी कि यार 5 साल से पूछता है, इस बार कैसे पूछ ले। तो डोंट गो इनटू दैट थिंग, दैट इज टाइम वेस्ट। Right. So, एक और question है, sir please also tell about how to prepare mains specific notes or mains ready notes. For example, ready introduction and conclusion.
तो यार ये जो है ना कि मेंस रेडी नोट्स, यू हैव टू थिंक दैट इन मेंस यू आर राइटिंग इन थ्री एस्पेक्ट्स. One is introduction, then comes body, and then comes conclusion. So when you are making a notes on a topic, you should remember that first thing is that you need to introduce this topic. So for example, my notes always try to contain definitions if there are keywords. So regionalism, you find definitions. Secularism, you find definitions. My friend's note, secularism, you might also find the model that India follows Southern Sambhav model or principal distance model. So these keywords should be there in the first 4-5 lines of your notes itself, so that when you're reading your notes, you know that first 4-5 lines I need to write an introduction in from these lines only. Then comes a big body chunk, and then ideally should come some points which are useful in concluding the question. So for example, Indian society जब पढ़ते हो आप, तो कंक्लूजन में अगर आप लेट्स से सुसाइड पढ़ रहे हो, तो कंक्लूजन में सुसाइड से रिलेटेड लॉ लिखा होना चाहिए आपके नोट्स में. या फिर आपने जेंडर इशू पढ़ा, तो कंक्लूजन में आपके कुछ प्रो जेंडर एक्ट्स होने चाहिए, जैसे पॉश एक्ट एक प्रो जेंडर एक्ट. तो जब आपके नोट्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन टाइप के पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आप एक्चुअल पेपर में अपने नोट्स को याद करोगे जब आंख बंद करके, तो आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट से मैं कंक्लूजन फॉर्म कर सकता. So that way you can write notes which will actually mimic what you are going to write in answers. That's a good advice. So now the question is how to answer questions on which we don't have any knowledge. हाँ, ये I try to show you. ऐसा होता है कि मतलब वसुंधरा जी थोड़ी स्माइल पास कर रही है, हम भी स्माइल पास कर देते हैं. ऐसा होता है, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं कि आप तो छोड़ो, आपके टीचर को भी कुछ नहीं पता होगा. रेलवे का क्वेश्चन जो आया था, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं रेलवे सर्विस में हूँ यार, हमें अब पढ़ाया है उन्होंने रेलवे हिस्ट्री वहां पे. टीचर मतलब इतनी डीप नॉलेज पूछ दी उन्होंने. फ्लोजॉइड्स, ज्योग्राफी हॉस्टल का बच्चा होगा ना, उसके भी पसीने छूट रहे होंगे कि फ्लोजॉइड्स कैसे बनते थे, याद नहीं आ रहा होगा उसे ढंग से. ये होने वाला है. तो इस क्वेश्चंस को देख के ना कभी मत डरो कि आपको कुछ पॉइंट्स नहीं आते. हमेशा याद रखो किसी और को भी नहीं आते, ये क्वेश्चन ऐसा है. तो इसलिए इन जगहों पे जो आपके मार्क्स आने वाले, वो आने वाले फॉर्मेटिंग पे, और वो आने वाले आपने कितने डायमेंशंस को टच किए हैं. तो इसलिए ट्राई टू मेक योर प्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वेश्चन सुपर गुड, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो उसको लगे यार इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, 1 नंबर फालतू दे दो, चाहे आता है इसको कुछ भी नहीं है. तो बाकी सबको 1-2 मिल रहे होंगे, आपको 2-3 मिल जाएंगे, उतने में खुश हो लो भाई, किसी को नहीं आता, 1 नंबर फालतू मिल गया आपको. तो देयर इज नो गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन. नहीं आता है तो वो दिखेगा आपके आंसर, 10 में से 5 नहीं आने वाले उस क्वेश्चन में. बट ऐसा नहीं है कि आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा फिर भी ला सकते हो आप बाकी बच्चों से ऐसे. और ये याद रखो, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं उससे किसी को मतलब नहीं है. अगर सबके 50 आ रहे हैं और आपके 60 आ रहे हैं, तो दैट इज गुड. सब लोगों के से आप, क्योंकि फाइनली रैंक मैटर करने वाला. तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दीज क्वेश्चंस. ट्राई टू मेक योर नॉलेज, उसको मैक्स आउट करने की कोशिश करो, ताकि आपके नंबर से ज्यादा है बाकी बच्चों से. तुषार, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए. अच्छा, Okay, so the next question is from Akhilesh. Sir, how to identify GS paper in GS paper 1 that if the question is related to geography or environment or disaster management? ठीक है, मेरे से पूछो ना, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई GS3 की नॉलेज यूज हो रही है जो कि एनवायरनमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट में है, तो मैं उसे क्यों यूज ना करूं. किसी ने ये थोड़ी कहा है कि GS3 में जो आपने पढ़ा उसको यूज नहीं कर सकते हो. तो डोंट गो इनटू वेदर ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या वेदर ये क्वेश्चन. इनफैक्ट ये करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है. क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे को ये लगता है कि चोल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है, तो मैं कभी एक पॉइंट जो बनता है इकोनॉमिक्स से कि जी चोल राज्य अमीर था इसलिए उनका आर्ट एंड कल्चर इतना अच्छा था, वो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं. क्योंकि मेरे को लग रहा है यार ये तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स तो मैं सोचूंगा नहीं. तो डोंट थिंक इन बाउंड्रीज. बिल्कुल 1 2 3 के लिए आप सोच के चलो कि 3 पेपर है, 3 बार मुझसे सेम नॉलेज बेस के ऊपर अलग तरीके से पूछा जाएगा, अलग अलग एस्पेक्ट. कभी हिस्ट्री के बारे में बात होगी, कभी गवर्नेंस के बारे में बात होगी, कभी इकोनॉमिक्स के बारे में, पर नॉलेज बेस सेम, कॉमन नॉलेज बेस है, कॉमन तरीके से आंसर. अगर कोई इकोनॉमिक मतलब प्योरली एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया GS1 के पेपर में, तो प्योरली एनवायरनमेंट का आंसर लिख दो, क्या जा रहा है, पूछा है तो ये आंसर है. Right.
So Akshita has asked, sir, please tell us how to use government websites for value addition. अच्छा, ये एक्चुअली GS2 में बहुत काम आता है। तो विकास पीडिया करके एक गवर्नमेंट वेबसाइट रहती है, वो सारी स्कीम्स की ऊपर समरी दे देती है, ठीक है। देन अभी करंट गवर्नमेंट क्या है, करंट गवर्नमेंट डैशबोर्ड्स बहुत बनाती है। तो डैशबोर्ड से आपको मेजर की पैरामीटर्स पता चल जाते हैं। एंड व्हाई दीज डैशबोर्ड्स, सरकारी डैशबोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज डैशबोर्ड्स आर गवर्नमेंट डैशबोर्ड्स। सो दे विल गिव यू डेटा पॉइंट्स which senior policy makers also try to catch and try to monitor. So these data points are not only important but also consolidated in one page only. So all the government dashboards for all the schemes, you can go through it once and you copy all the key data points, and that will provide you value addition material. So like this you can do this. PIB, what I found is PIB is not a very insightful source, because it provides a lot, 10 to 30 posts every day, and or majority of the posts are quite administrative in nature. So that is not a good website for UPSC preparation. But Vikaspedia and all the dashboards are very helpful. So Rishiraj has asked, so can we simply go with toppers notes for GS 1 to 3 instead of making our own, as they are more refined and can memorize, and we can memorize them and add value addition in that only? तो ऋषिराज से मैं ये बताना चाहूंगा, एक सजेशन रहता है जनरली कोई भी प्रिपेयर करते हुए, जिनको बोलते हैं भाई 200 के नोट से कोई पास नहीं हुआ आज तक, ना मैं पास हुआ, ना आप पास हो गए, ना ही कोई और पास होने वाला है। नोट्स आप अपने ही बनाइए, और सजेस्टेड है हाथ से बनाइए। आप जब अपने नोट्स बनाते हो, होता क्या है नोट मेकिंग में ना, ये ध्यान रखो कि बहुत बार जो एस्पेक्ट्स मेरे को याद रहते हैं, मेरे हमेशा दिमाग में रहते हैं, वो मेरे नोट्स में लिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है उनको बार बार रिवाइज करने की। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन, अच्छा आपने कोई काउंटर क्वेश्चन पूछा, अभी बताता हूँ मैं इसके ऊपर। सो what happens is usually toppers notes will contain those aspects more in which they are weak, and will not contain those aspects in which they are strong. So going with their notes will not be a good idea, because you are not weak and strong in respective areas. So prepare your own notes. Counter question क्या है, क्या पूछ रहे थे ऋषिराज? सर आई एम नॉट गुड इन नोट मेकिंग बट गुड इन मेमोराइजेशन। हाँ तो भाई नोट मेकिंग से मेमोराइजेशन होती तो है। ठीक है, so what happens is if you are good in memorization and not note making, so I would say start reading a lot and start to underline or highlight in the page where which you are reading. Base material should always be NCERTs. I have talked to so many talkers in Labasna. None of the talkers have actually said that their first go-to reference was other toppers. Everyone after 2-3 years of preparation actually go to some other toppers note to improve their existing notes. So base should be from NCERTs and other materials that you find from your coaching institute, whichever it is. And to build on some weak areas, you can go to some toppers notes, but that cannot be your primary source. Right. अरे तुषार, सो एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि GS 2, 3, 4 का मास्टर क्लास आप कब ले रहे हो? अरे 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 भाई, मेरे को अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, यही बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है। ठीक है, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बताता हूँ जो आपको नहीं पता है। मतलब लिटरली पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मतलब मेरे 6 नंबर कम आए होते तो आपको लगता है कि यार कौन बेवकूफ आदमी है यार, रैंडमली 4 साल हो गए, इससे कुछ तो हुआ नहीं है, ये कैसे आ गया। 6 नंबर की वजह से मैं अंदर हूँ। तो ये मत सोचो कि किसी एक टॉपर के ऊपर बहुत सारी वो इम्पोर्टेंट वो है। किसी भी टॉपर को भाव देने की भी जरूरत नहीं। बहुत सारे रैंकर से मिला हूं मैं, ऐसे कुछ को तो देख के ऐसा लगता है यार ये कैसे आ गया, और कुछ मेरे को देख के ऐसे सोचते होंगे कि ये कैसे आ गया। तो मतलब डोंट गो इनटू दोस थिंग्स, बिलीव अपॉन योरसेल्फ। ये इसके अलावा करोगे भी क्या, तो अपने ऊपर यकीन रखिए। मैंने ऐसे नहीं आखिरी स्लाइड लिखी थी कि आप ये कर सकते हो। मेरे को भी लगता था, जेन्युइनली लगता था कि ये मेरे बस की काम नहीं है, बट फिर हो गया तो अब लगता है कि ये हो सकता है। तो है, और मतलब अगर नहीं भी हुआ ना तो भी मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 6 अटेम्प्ट करके फिर नहीं होता। तो डोंट, छोटा दिल मत छोटा करो। मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है, एक पेपर के बेसिस पे जिंदगी नहीं घूमने वाली। जब 4-5 साल फेल हो गए तो ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई, कितने कुछ बन जाओ, खाओगे तो रोटी रोटी दाल, तो मतलब क्या है, पॉइंट क्या है। अफसर IAS भी वही खाता है, आप भी वही खाओगे, इसमें क्या है।
कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरी कर लेना कहीं पे, अच्छी नौकरी, आजकल वैसे ही प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, तो इतना टेंशन मत लो, ये हो जाएगा। वेरी वेल सेड तुषार, बहुत अच्छा सेशन था, वेरी इंसाइटफुल। आई बिलीव कि किसी ने अगर 80% भी अप्लाई कर लिया अपने अटेम्प्ट में तो दिल बेनिफिट अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। धन्यवाद। Maybe we'll have another sessions with you if you have. श्योर। Thank you so much. Thank you for making थैंक that. Everybody that joined, thank you so much for being a wonderful audience. Thank you so much. ठीक, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।